Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to another edition of Forex and Commodity Analysis with SD. And I'm SD Shanand Das. I'm a multi-asset trading and investment specialist with a specialized focus on global macro. तो ये वीडियो में आई डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स जो पोजीशन के बारे में मैं सोच रहा हूँ, व्हाट आर माय पोजीशंस. And you all know that for my trading, I use my fountain of gold setup, which is if you have access to it, you can go to invite only and you can find these indicators. I'm using SD Rainbow Wave version 1 and SD RSI X to create this fountain of gold setup. Or since I'll be analyzing commodities, we'll be selecting the commodity setup. So in commodity setup, we are currently in the 125 minutes chart, and it is quite clear the commodity are in serious pressure today, and वो price से भी दिख रहा है. If we look at the daily chart, and we'll be able to visualize that majority of the commodities are in a falling mode, jinka strength is clearly declining. So overall, they're still in the bullish strength area, but overall strength is failing in them. So 125 मिनट में सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम गिव ए बिग जंप, कोई एंट्री करने का मौका नहीं दिया. आप लोगों को मालूम है वी एग्जिटेड अ बिट अर्ली with the caps, this year, this red caps, this is the one we exited our portfolio, background color yellow. Next, what we saw a big jump in aluminium. उसके बाद कोई opportunity नहीं मिला फिर से entry करने का, and that is actually good. Now the aluminium has turned lower, तो अभी के लिए we are not thinking about any kind of buy opportunity in our 125-minute time frame. But एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, despite the sell signal, the probability of sell trade winning is pretty low, and preferred trade is still somewhat buy breakout and buy support. So इतना strong metal buying था, so there could be sell off, there could be correction, but immediately I'm not thinking about selling this. There are some support around 228 and 229.35, but once this is broken, next support is around 225.4, and interim we have around 227. So a lot of interim support we have currently. Maybe we'll see a bounce back, but abhi tak aluminium is not ready. Similar picture copper mein we had exited our positions, एंड कॉपर्स में फिर से एक बाई करने का मौका दिख रहा था. वी हैड अ ब्यूटीफुल आरएसआई एक्स क्रॉस, बट ऑलमोस्ट नाइट एंड तक कोई बाई कंफर्म्ड बाई सिग्नल मिला नहीं यहाँ पे कॉपर में, because we need a full green candle. Next day copper started, after the jump copper started showing the weakness. So copper में भी trade currently is not there, and with the red background the buying is over. स्टिल देखा जाए तो बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी इज हायर, मतलब मार्केट बिल्कुल ही सेलर्स के हाथ में अभी तक नहीं गया है, एंड इट इज आल्सो नॉट इन द हैंड्स ऑफ द बायर्स. सो it's a mixed market situation. Volatility lot of could be comebacks हो सकता है, जिसके साथ मतलब न्यूज इवेंट्स के साथ there could be more volatility in the metal segment. तो ओवरऑल थोड़ा आउटसाइड रहना ही करंटली बेहतर होगा. जो भी ट्रेड हम लोग देखेंगे, एल्यूमिनियम, जिंक हम लोग एग्जिट कर गए थे. आई टॉक्ड अबाउट 250 बीइंग अ वेरी साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लेवल, एंड सिंस देन जिंक हैज ब्रॉडली बीन वीक. आज एक मार्जिनल ग्रीन सॉक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट इट रीच्ड आवर एम्प्टी दिस मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन. So naturally finding some support area. यहाँ पे भी support, this is a very strong support area, 240. यहाँ पे previous candle bottom is there. So these are the areas. ये जो zone है from 240 to about 238, ये एक support zone है, और जिसके एरिया से सपोर्ट मिल भी रहा है यहाँ पे जिंक को. बट वी आर फार अवे फ्रॉम जे हम लोग कोई भी बुलिश बेट ले सके. रैदर सेल रेजिस्टेंस आने वाले दिन में अपॉर्चुनिटी बन सकता है. करंटली विल स्टे अ बिट आउटसाइड. मेटल्स हैव बीन वेरी स्ट्रांग. जिंक में एक सेल ऑफ का सिग्नल आया था, बट रिस्क रिवार्ड बहुत ही नॉट अ ग्रेट कंपेयर टू जब अदर मेटल्स बढ़ रहे थे. जिंक वाज द वन जो पहले थोड़ा वीकनेस दिखाना चालू किया कंपेयर टू द अदर मेटल्स.
Gold, silver, I'm trading based on the daily chart, and I'm also looking at the international gold chart. And international gold chart में finally I'm able to see the weakness, and हम लोग exit कर जाएंगे position now. उस दिन हम लोग पोजीशन एग्जिट कर गए थे ऑन द डेरिवेटिव साइड विद द बिग स्पाइक, बट अभी जो दिख रहा है क्लियरली मोमेंटम फेडिंग हो रहा है. दिस बिग स्पाइक के दिन हम लोग आधा पोजीशन निकल गए थे. नाउ विद द डेरिवेटिव, अगर किसी का पोजीशन है यू शुड सीरियसली कंसिडर. अभी भी बायर्स के हाथ में, ऐसा नहीं सेल आ गया है, बट वील हैव टू वेट फॉर द अगेन अपॉर्चुनिटिस्टिक मोमेंट टू एंटर. और उसके लिए आप 125 मिनट का चार्ट फाइन ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 125 मिनट चार्ट में देखिए यहाँ पे भी मोमेंटम डाउन दिख रहा है, और मोमेंटम जब डाउन है यहाँ पे देयर इज नो पॉइंट इमीडिएटली गो फॉर अ बाइंग. सो यहाँ पे ब्रेकआउट होने दीजिए. 2385 2402 ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका, ये जो मार्केट सस्टेन कर रहा है बिलो 2375, दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज. इफ वी सी अ ब्रेकडाउन, गोल्ड में कंटिन्यू टू सम सफरिंग इन द रीजन. सो डेली चार्ट में आफ्टर इट इज रिकमेंडेड कि थोड़ा पोजीशन हल्का किया जाए और ऑन द डेरिवेटिव साइड. और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के साइड जो हम लोग एज पर आवर साइकिल बाइंग कर रहे हैं, दैट विल कंटिन्यू टू बाई ऑन अ रेगुलर बेसिस. This I am doing from October 2022 as per the cyclical signal, और वो जारी रहेगा. सिल्वर में जो अगर हम लोग देखें, सिल्वर सिमिलर पिक्चर, आ डाउनवर्ड मोमेंटम सस्टेन नहीं कर रहा है. दिस इज एन सिग्नल, प्रोबेबली यू शुड रिकंसिडर सीरियस बुकिंग. शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेरिश हो चुका है. दिस इज नॉट अ ग्रेट टाइम राइट नाउ टू बी ऑन द डेरिवेटिव साइड. सिल्वर इज वीक इन द 125 मिनट्स चार्ट में भी क्लियरली दिख रहा है. So we would like to have the momentum back on our side 125 मिनट के चार्ट में. Then only we can think about going long against silver. Silver जो ये लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है 28.68, this is not a very encouraging news for the bulls. So आप जरूर चाहेंगे सिल्वर बाई करने के लिए. it goes above 28.7 एरिया, तो यहाँ पे आप क्रॉसिंग अप अलर्ट लगा दीजिए and wait कीजिए for the right moment to go long on silver. So now we will what we are going to do, commodities. Crude oil एक बार देखेंगे. क्रूड ऑयल में broadly कोई पोजीशन है नहीं. 125 minutes chart crude is broadly in a more rangish mode. 125 मिनट चार्ट अगर हम लोग देखेंगे, इट्स ब्रॉडली रेंज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे क्रूड ऑयल. एंड वो प्रोबेबिलिटी में क्लियर है, 50% चांस की कंसोलिडेशन करेगा, 57% बियरिश होगा. सो ब्रॉडली बियर्स के हाथ में, क्योंकि बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो इन 125. अगर डेली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट में probabilities are changing, but overall देखा जाए it's still in the hands of the buyers in the long trend. but हम लोग ये crude trade मेरा बहुत वे पहले exit हो चुका है. currently there is a no trade, और candle देखिए बहुत squeeze हो गया है. so in coming days we may see a big movement, and looks like it can go for a downside movement. 125 minutes chart में buy का probability एकदम zero level, almost tending to zero है, which is really concerning news for the bulls. despite daily chart में उनका probability जीतने का भले ही ज्यादा हो, consolidation और bearish होने का probability gradually बढ़ते जा रहा है. Natural gas में currently I have no position, though there is a breakdown, but fundamentally natural gas has somewhat started looking different. We had a beautiful sell signal, but natural gas is not my one of the top favorite counters, but this is due an opportunity to for the short side in natural gas. So natural gas में री-एंट्री के लिए 125 मिनट का इस्तेमाल किया जा सकता है, and in 125 minutes there is an exit with a full green candle.
So renewed down momentum, bearish pressure आने से then only one can go short for natural gas. But natural gas में ये जो डेली चार्ट के हिसाब से जो सेलिंग प्रेशर आया है, इसके बावजूद भी consolidation probability is on the higher side. So I have skipped personally for natural gas to look for बेहतर opportunities. एंड फंडामेंटली लग रहा है कि थिंग्स जैसे जा रहा है कि नेचुरल गैस प्राइस करंटली लग रहा है बढ़ेगा, नॉट हियर नाइमेक्स में अभी नहीं. इट्स लुकिंग स्ट्रॉन्ग इन एशिया, इट इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग इन यूरोप, बिकॉज यूरोप में फंडामेंटल रीजन है दैट नेचुरल गैस प्राइस कैन गो अप, एंड फाइनली काफी लेट दैट प्राइस इंक्रीज कैन एक्चुअली अफेक्ट दिस नेचुरल गैस. बट अभी तक दिस नेचुरल गैस इज नोवेयर रेडी टू गो लॉन्ग. Whereas if we look at the international, say, European natural gas, this is, as I said, it is turning bullish, and that bullish after quite some time. And this bullishness of natural gas in Europe has fundamental support. ये winter के वजह से the stocks in Europe of natural gas in many countries, it has depleted. And depleted close to, like France, it is even below its storage ka 50%, around 44%. So Europe will need natural gas, and naturally price is going up, and this is in future likely to affect the New York or the NYMEX natural gas as well. So currently I'm not looking at all the factors. I decided no natural gas. I'm not looking for bearish trade immediately for big opportunities. Nahi. So that's all, my friends, on what I'm thinking on the commodity side. Currently, majority of the commodity trades are closed. If you, this gold, silver, all the derivative trade, exchange traded fund trade is there, but looks like gold is showing some weakness. Now, as long as silver floats above 80,000, then the exchange traded fund long trade is still active. But if silver starts moving below 80,000 or $25.6 ke niche in the foreign market, international spot market, then we have a trouble with the exchange traded fund outlook. So that's all, my friends. Thank you so much for watching this video. If this is helping you, don't forget to like and subscribe. Once again, as usual, happy trading.